It's a beautiful evening today, and again, after 1 week's break, I am going live with you guys. And today, before starting any live session, I would be addressing a few things from my side. And the few things would be that we will be talking about ear surgeries and what type of ear diseases do we have. Now, what type of ear diseases do we have? It could be a simple ear infection. ये एक simple ear infection भी हो सकता है. ये कान में पर्दे की प्रॉब्लम हो सकती है, नस की बीमारी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. सो ईयर की डिजीज़ेस को काइंडली नेग्लेक्ट ना करें. एंड सारी चीज़ें इस दुनिया में वैक्स नहीं होती. ट्रू, एवरीथिंग इज़ नॉट वैक्स. So whenever you are encountering such things of the ear and अगर आपको discharge की issues हैं, then in that case please do seek the advice of a doctor and a specialized doctor like an ENT surgeon. और वो आपको एक सही तरीके पे, एक सही डायरेक्शन में he or she is going to guide you. So ear diseases can be of many varieties. कभी कभी सिंपल पर्दे में छेद हो सकता है, कभी कभी इन्फेक्शन, सिंपल इन्फेक्शन विच एक्यूटली आता है. इट कम्स इन एन acute manner and then settles down with the use of antibiotics as prescribed by your doctor. And in other ways, most of the time it can be like the ear infections can be long. I mean, बहुत लंबे समय से या बहुत लंबे ड्यूरेशन तक ये चलते रहते हैं. एंड फॉर दैट सेक, हाय, हेलो दिलशाद, हाउ आर यू? हेलो अमित, हेलो प्रिया, हेलो श्वेता. सो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ, गुड इवनिंग मनीष. ओके ओके फाइन. So that may be because of so many reasons. So एक रीज़न को रूल आउट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली अगर आपकी रीजंस अनक्लियर हैं और आप अपने कान में स्टिल अपनी ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, देन आई थिंक यू माइट बी इन ट्रबल. सो ये ट्रबल अवॉइड करनी है. यू हैव टू रियली रियली अवॉइड दिस ट्रबल, एंड व्हेन यू अवॉइड दिस ट्रबल यू विल बी इन द सेफर जोन. नाक कान गला एक ऐसी चीज़ है वेयर These are your special senses. और अगर इस स्पेशल सेंसेस को किसी भी वजह से अगर ये गड़बड़ हो जाती है, ये कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, then in that case you really know that once damaged it will become damaged forever. So please, for that sake, keep your ears protected. And for any, even the trivial reasons, even for very small reasons, please show to your doctor. That's so important. Through my live videos, I always tell each and every person to become aware, because अगर आप health से aware नहीं हैं, if you're not aware with your health, then you're not aware of anything. You get lots in your life. You do so many things in your life, but if your health is not good and if your special senses are not working, अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो बहुत difficulties you are going to face in future. So ear disease को definitely do not ignore, as I told you, they can be troublesome like anything. Sometimes कुछ ear diseases ऐसी होती हैं जिसे हमें ऑपरेट करने की ज़रूरत होती है. So in that case, very importantly, आप अपने सर्जन से डिसीजन लीजिए, क्योंकि ईयर सर्जरीज बहुत तरीके की होती है. लोगों को लगता है सिर्फ पर्दा लगाने की सर्जरी होती है, बट देयर इज समथिंग मोर बियॉन्ड दैट. यू गेट लॉट ऑफ अदर थिंग्स. many ear surgeries which have come up, endoscopic ear surgeries, जहाँ पे बिना ear damage किए हुए and बिना
पर्दे को बिना कान में इंसिजन लिए बिना, most of the time we can perform the ear surgeries, and these are known as EES, which is known as endoscopic ear surgery. Recently we have introduced this ear surgery, endoscopic ear surgery, at our center as well. And our center is fully equipped center in Janakpuri. It specializes in ear, nose, throat, rhinoplasty specifically, and facial aesthetic surgery, and all facial, surgical and non-surgical things. We also run a center which is known as Aishanya Aesthetic Center, which is founded by me, and we are dealing there with all facial aesthetic world like skin, hair, laser, and all facial aesthetic surgeries. So trust our center for the same. बहुत लोगों ने हमसे ये बातें पूछी हैं, मैम आई वांट टू गेट ऑपरेटेड, मुझे आई एम फ्रॉम जम्मू, आई एम फ्रॉम कश्मीर, आई एम फ्रॉम आसाम, सो व्हाट इज़ द प्रोविजन एट योर सेंटर? So there's a lot of provision which we provide to our patients, and if they are from outside and finding it difficult, अगर वो difficult समझते हैं to come at a center, then definitely we provide a lot of provision for them so that they are safe, secure, get operated, and they can go back home safely. So definitely these are the few things which our center offers. सबसे बड़ी चीज़ हमारे सेंटर की जो खूबी है, दैट इज़ पेशेंट केयर एंड पेशेंट सेटिस्फैक्शन. मी एज अ सर्जन हैज़ ऑलवेज ट्राइड टू मेक माई सेंटर इक्विप्ड फॉर दिस रीज़न, क्योंकि मुझे लगता है अगर मेरे पास पेशेंट केयर सही है, सही इलाज मैं कर सकती हूँ लोगों का, देन दे शुड कम टू अस, एंड देयर इज स्पेस फॉर एवरीवन. ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट ऑपरेटिंग एनीबडी हु इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर और सोशली और फाइनेंशियली they are weak. We are getting them sponsored also, and from different places, and we have EMI options at our center so that they can easily get away with their surgeries and their concerns get over. उनकी concerns खत्म हो जाती हैं कि मुझे एकदम lump sum pay करना है or anything of that sort, and for that sake we have EMI options जिसमें patients हमें EMI के तौर से पेमेंट कर सकते हैं. So, and we have kept the charges at we are offering all the cut-end technology therapies or cut-end services in our center, and for that we are charging almost like minimal. So this concept of mine to come live was to take up and make you aware of the small problems which you face in your day-to-day activities regarding your ear, nose, throat, skin, hair and rhinoplasty, and definitely facial aesthetics. So I give from 8 to 8:30 I give a very short tip on everything. So today's tip is that if your ear aches, अगर आपका कान दर्द होता है तो प्लीज़ वैक्स ड्रॉप्स ना डालें, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, बिकॉज हर चीज़ें वैक्स नहीं होती. आई हैव बीन रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन. प्लीज़, ये आपकी स्पेशल सेंस है, अपने स्पेशल सेंस के साथ डोंट प्ले विद इट. इट्स रियली गोइंग टू डैमेज यू इन फ्यूचर. सो फॉर दैट सेक I have started this live session so that I make aware to all my patients who want to know, because ENT एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि वेरी सुपर स्पेशलाइज सब्जेक्ट है और जनरली लोगों को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि इसको कैसे ट्रीट करना है एंड व्हाट ऑल टू डू. सो दिस इज़ बेसिकली टू सिंप्लीफाई द ऑब्जेक्टिव्स, द सिंप्लीफाई ENT. एक सुपर डुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड को मैंने कोशिश की है अपने इस लाइव सेशंस के द्वारा सिंप्लीफाई करने की. और कुछ चीज़ें हम सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाई है इस चीज़ की. सो वंस द सोसाइटी इज़ अवेयर, वी डॉक्टर्स नो व्हेन टू ट्रीट एंड वी कैन नेवर से नो टू एनीबडी. क्योंकि अगर मेरे पास कोई पेशेंट लेट आता है, अपने चीज़ों को बिगाड़ के आता है, then that's a pretty
दैट्स अ प्रीटी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर डॉक्टर्स ऑल्सो, ये डॉक्टर्स के लिए भी डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो मैं अपने इस लाइव सेशन के द्वारा लोगों से ये कन्वे ज़रूर करना चाहूँगी, बी ऑन टाइम। जैसे आप अपनी ड्यूटी टाइम पे करते हैं, प्लीज़ अपने हेल्थ को उतनी ही प्रायोरिटी दें, और डू show to your doctor whenever required, whether it is ENT. I'm not talking only about ENT. I'm also talking about if you are a hypertensive, if you are pre-diabetic, if you have some problems, if you have some body aches, if you have hormonal fluctuations. Not only that, everything, every damn thing. Yes, Dilshad, I am responding. I am fine, thank you. And you have been always logging into my sessions. There is one message which is still pending. We'll talk later about it. Okay. So for that reason, hello Lokesh, how are you? Long time. How have your things been all these days? Okay, so for that reason, this live session was made, and this live session is to handle all these cases. Dilshad, I would like to reply your question, though I'm not speaking out your question, but definitely if your mind is controlled, you will get controlled. So start controlling your mind. आप अपने, कोई भी इंसान अपने माइंड को कंट्रोल कर सकता है, और इस हद तक कर सकता है, आपने बहुत सारी थ्योरीज, एपिक्स, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो बेसिकली दिलशाद, मैं आपको इस लाइव लेक्चर के द्वारा एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर ये सही है और इस पे अगर आपका कंट्रोल है, देन यू कैन स्टॉप एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आपको इसके ऊपर ज़्यादा पॉन्डर करने की ज़रूरत नहीं है। इट हैपन्स विद समटाइम्स सम पीपल, बट यू कैन स्टॉप इट, एंड दिस इज़ योर सोल्यूशन। कोई ऐसी मेडिकेशन नहीं होती है जिसके कारण आप इसको स्टॉप कर, जिसके द्वारा आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, बट ओनली एंड ओनली आपका माइंड इसको डाइवर्ट कर सकता है। ओके, आई होप यू हैव गॉट द आंसर। ओके, फाइब्रॉइड्स, नेजल पॉलिप सर्जरी, बायोलैटरल 3 रिविजन सर्जरीज, एलर्गन इन्हिबिटर लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, डेफिनेटली। और आपको अपने सिंड्रोम्स भी ना रिजवान जी, आउट सिंड्रोम्स, बिकॉज बहुत सारी सिंड्रोम्स ऐसी हैं जिसमें इम्पॉर्टेंटली पॉलिप्स रेकरेंट होते हैं। पॉलिप्स में रेकरेंस की चांसेस डेफिनेटली होती है। इवन हम लोग काउंसिल करते हैं, व्हेनेवर वी आर डूइंग अ पॉलिप सर्जरी, वी डू काउंसिल कि आपकी पॉलिप्स रिकर कर रही है। बट हमारे सेंटर में खूबी ये है कि इनिशियली हम लोग सारे सिंड्रोम्स को रूल आउट करते हैं, क्योंकि पॉलिप्स बहुत सारे सिंड्रोम्स के द्वारा हो सकता है। एक सिंड्रोम में आपको नेम आउट कर रही हूँ बिकॉज दे आर वेरी हाई ग्रेड सिंड्रोम्स, बट मैंने अपने प्रैक्टिस में कम से कम 3 से 4-5 लोगों को सैम्पटर्स ट्राइड के साथ आते हुए देखा है। इसमें पॉलिप्स भी होती हैं, एस्थमा भी डेवलप कर जाता है, और साथ साथ में पेशेंट को डिस्प्रिन से एलर्जी होती है। सो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। इन दैट केस आई डू एलर्गन इम्यूनोथेरेपी फर्स्ट, एंड सेकेंडली आई ऑल्सो गिव देम द इंजेक्टेबल थेरेपी इन द नोज। सो वैसे में सेटलमेंट इज वेरी गुड, एंड अवॉइडेंस ऑफ डिस्प्रिन एंड ब्रोंकियल एस्थमा डेफिनेटली। सो प्लीज रूल आउट, अगर आप पॉलिप सर्जरी कर रहे हैं तो एक डिटेल्ड एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है अपने पॉलिप सर्जरी से पहले। एंड पॉलिप्स है, दैट्स नॉट द सोल्यूशन, इट हैज़ टू गेट सर्जरी, ये कोई बात नहीं होती। बात ये है कि आप उसकी जड़ तक जाएं कि पॉलिप्स क्यों है, आईजी लेवल कितना है पेशेंट का, क्या वो पहले से ही ट्रीटमेंट करा रहा है या उसकी सर्जरी हो चुकी है। अगर हो चुकी है और फिर से विद इन 6 मंथ्स या 1 ईयर वो रेकर बैक कर रहा है, तो क्यों रेकर बैक कर रहा है, उसकी आप सिंड्रोम्स को रूल आउट करिए। बहुत सारे सिंड्रोम्स हैं जिसे हमें रूल आउट करने की ज़रूरत है। सो इन दैट केस इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैम मैंने ओके ओके, आई थिंक मेरे किसी असिस्टेंट से आपकी बात हुई होगी। एंड रिजवान जी, यू आर मोस्ट वेलकम फॉर सजेशंस, एंड वील गेट बैक टू यू। आई विल डेफिनेटली काइंडली राइट योर नेम।
ओके, कोल्ड एलर्जी, प्लीज़ आप डेफिनेटली अगर आप 3 रिविजन सर्जरीज कर चुके हैं तो गेट अ सर्टिफाइड इम्यूनोथेरेपी प्लीज़. मैं आई डोंट वांट यू टू कि आप सर्जरी भी कराएं और फिर एक इम्यूनोथेरेपी लें और फिर उससे चीज़ें आपकी और बिगड़ती चली जाएं. सो आई डोंट वांट यू टू गेट इनटू अ सूप. मैं चाहती हूँ आप सर्टिफाइड तरीके से इम्यूनोथेरेपी स्टार्ट करें. एंड डेफिनेटली आफ्टर डिकंजेशन मस्ट है रिजवान जी. सो डिकंजेशन करना है, आईजी लेवल्स को कंट्रोल करना है, लाइफ लॉन्ग नेजल स्प्रेज यूज करने हैं. सो अगर आप लाइफ लॉन्ग नेजल स्प्रेज नहीं यूज कर रहे हैं देन दैट्स अ क्राइम बेसिकली. सो नेजल पॉलिप सर्जरी के बाद जनरली आई एडवाइज अ लाइफ लॉन्ग नेजल स्प्रे. सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट्स. Different doctors have different ways of treating things and diseases, and I have my own style of treating in different way. So things and treatments vary from doctor to doctor, and the response with the patients vary from patients to patients. So it's a very common phenomenon which we are experiencing. Amit, can you please repeat your question again, please? I actually didn't get you. I'll be just seeing with this. I'll just get back to your question, Amit. Okay, somebody wants to take treatment. Amit, you can send that patient to me and we'll do the needful. Okay, so definitely as it is a quite a complex condition, so I would like कि आप एक बार patient को visit करने कहिए, क्योंकि that is important for our things. I mean, certain things can't be told over live chat. Is this best ENT clinic in Janakpuri, Delhi? That you have to decide. That my patients will decide. I would definitely call myself that I am the best and I can give you my best services. Whether I am best in the best ENT clinic or not, that I leave to God and that I leave to my patients. But with my patients, I try to be best. And that's the answer I can give you. ओके, मैं क्या करूं कि नाक बहता रहता है मैम, मैं क्या करूं? डेफिनेटली अगर आपका नाक बहता रहता है तो साइनस की आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और छींके आने की प्रॉब्लम है या आपको नाक बंद फील होती है या सिर्फ बहता रहता है, दैट ये आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. सो इफ यू कैन टेल मी दिस देन दैट वुड बी मोर, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन. सर पहले आप सर्जरी कराएं उसके बाद इम्यूनोथेरेपी पे स्विच करें. Okay, so we were talking about नाक बहता रहता है and what to do about it. So what to do about it? There are many things you can do about it. If it is allergic, you have to take an anti-allergic and you have to see your doctor why you are allergic to certain things. कुछ कभी कभी फूड मटेरियल स्टॉप करने के बाद एंड सर्टेन आपकी इम्यून स्किन प्रिक टेस्ट करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि आप किस चीज़ से एलर्जिक हैं, और उस मुताबिक वी कैन स्टॉप दोज फूड प्रोडक्ट्स और स्टॉप दोज थिंग्स जिसके एक्सपोजर से आपको प्रॉब्लम है. सो फॉर दैट रीज़न you can do the needful. I mean, so नाक बहने के बहुत सारे reasons हैं, वो मुझे rule out करने पड़ेंगे. But in the same time, Mr. Lokash, you can get a X-ray PNS OM view. Please write it down. X-ray PNS OM view. I hope you've got the answer, Mr. Lokash. आप ये करा के next Tuesday को मुझसे log in करिए. And definitely we will discuss the reports, what it is basically.
and X-ray PNS OM view. I am repeating it again. Please ये करा के get back to me, and we'll be reviewing things with you back again. Okay, so just 3-4 minutes left for this live session, and somebody is asking me क्या नारियल ऑयल लगाना चाहिए. आप लगा सकती हैं. It can be used for the entire body. It is very good moisturizer. It is a very good hair nourisher, and it has got lots of omega. So anyways, it's has the potent quality of nourishing you from wherever you apply. Sometimes people use it on the skin also, on their face also, but I generally discourage using it on the face. For hair and for the body, it's really good. Hi Dheeraj, how are you? Hope you have been doing well all these days. Thank you. Thank you. Okay. What is the best treatment for hair loss? Many treatments available, sir. Not only one. I mean, you need to know the reason for hair loss. You must एनालाइज कि आपका डॉक्टर बता सकता है कि हेयर लॉस किस वजह से है. वजह जानना बहुत ज़रूरी है सर. अगर वजह नहीं पता है तो हेयर लॉस ट्रीटमेंट क्या. बट स्टिल, और मोटा मोटी बेसिक्स में there are many treatments like PRP, there are growth factor concentrates in the market, there are exosomes, there are stem cell therapies, there are low laser light therapies, and there are medications which can be given, and there are many things. I mean, but definitely before anything, this must be ruled out. Cause must be ruled out. So there is one more question. No, Mr. Rizwan, I think adenoid और tonsil कराने से कुछ फायदा होगा मैम. I mean, I have to see. I mean, Mr. Rizwan, it's adenoids and tonsils एक ऐसी चीज़ है this is a very hidden thing. So हमें वो गला देखना पड़ेगा. आपकी नेजल एंडोस्कोपी करके आपकी एडिनॉइड्स की साइज देखनी पड़ेगी. बट येस, एडिनॉइड्स कैन बी अ बिगेस्ट कॉज ऑफ एलर्जी. बहुत सारे छोटे बच्चों में वी हैव सीन दैट एडिनॉइड्स हैव कॉज्ड हैवॉक. I mean, they are prone to allergies and all those things, and they get cough and cold on and off. They get weak on and off. So definitely adenoids can be one of the reasons for allergy, and it can be, tonsils can be one of the reasons for, tonsil adenoids can be one of the reasons for stunted and low growth. Definitely. Okay, so I think I have solved. We had a lot of questions today, and we have solved a lot of questions today, and it's time now to close down our live session. आपके कान में खुजली होती है, पस वगैरह की डिस्चार्ज तो नहीं है आपके कान में. So you should get it checked. For that sake, you can use, don't. Okay, thank you रिजवान जी, आपने अपनी सर्जरी की फाइल देखी. I'll get back to you, and definitely my assistant will help you out in everything. अगर आपको सिर्फ खुजली की प्रॉब्लम है, then I think you should not worry about it. It might be little dryness, so you can just take betnovate ointment, and you can apply it just in the inside of the canal, and with a very clean finger. That should be clean, and nails should be cut, and you will see a lot of difference with that. Okay, so with this live session, I would be ending, and I hope to see more and more people joining. Thank you, thank you. I hope that more and more people join us by next week, and this live show really proves out to be a wonderful awakening experience for you guys and those my patients waiting down there
I want you all, if you are liking this live session, मैं चाहती हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स के को स्प्रेड करें इस लाइव सेशन के बारे में, ताकि हम जो भी बातें करते हैं रिमोट एरियाज़ में जहाँ लोगों को ENT डॉक्टर्स की एक्सेस नहीं है, आई वॉन्ट यू ऑल टू स्प्रेड इट ऑन योर फेसबुक अबाउट आवर लाइव सेशन. वो अपने क्वेश्चंस पूछ सकें, सिक्योर हो सकें. हेलो अतुल जी, है ना? सो आई रियली वॉन्ट दैट दिस शुड बी स्प्रेड. आप अपने फेसबुक में 5 फ्रेंड्स को टैग करिए. ईच ऑफ यू डज इट. सो दिस स्प्रेड्स अवेयरनेस अमंग all of you, and just think of those poor people who are getting denied of anything. Hi Poonam, how are you? So please, it's my earnest request to all the members who have joined today and who are watching me live today. Okay Rizwan ji, definitely I will see your thing today. I'll ask my assistant to please write down your name, Mr. Rizwan. Please mention it on WhatsApp, and so that I can really see it, because रिपोर्ट्स बहुत आती हैं सर हमारे पास, so it's difficult. अगर आप लिख के भेजेंगे तो हमारे लिए better होगा ये. So all of them who have joined us today, please spread it across your Facebook profiles. आप अपने Facebook प्रोफाइल में लोगों को इन्वाइट करिए, और प्लीज़ कोशिश करिए कि लोग हमसे रिमोट एरिया से भी जुड़ें, ताकि जिन लोगों के पास ENT सुपर स्पेशलिटी केयर या स्किन हेयर लेज़र रिलेटेड ट्रीटमेंट्स की ऑप्शंस नहीं हैं, जिन्हें अवेयरनेस नहीं है, उन्हें हम लोगों से अवेयरनेस मिले और वो कभी भी अपने तरफ से कोई गलती ना करें. ठीक है? आई एम रियली वरीड अबाउट द मेडिकल सिस्टम, द मेडिकल मैनेजमेंट. मेट्रोपॉलिटन में बैठ करके सब लोगों को सुविधा है, एक्सेस है हेल्थ केयर की, बट स्टिल माई मेन एम इज़ टू हेल्प आउट दोज पीपल इन नीड, and definitely ask all the queries to everyone who is joining this show. Thank you so much. I really seek a lot of blessings from you all, and I expect that you will spread this, and this will definitely channelize, and we will have more and more questions, so that those who are sitting without help, without any doctor, should get a specialist care. That is the most important thing. एक specialist care बहुत important है, और हेल्थ से बड़ी कोई चीज़ नहीं है. सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे. गुड नाइट. सही था ना?